Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, in this video lecture, we will discuss the chapter 9, Force and Laws of Motion. Students, in chapter Motion, we have already discussed about motion. Students, when an object changes its position with time, it is said to be in motion. And when an object does not change its position with time, it is said to be at rest. जब कोई वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम मोशन में कंसीडर करते हैं, और जब कोई वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम रेस्ट के पोजीशन में कहते हैं। यानी जब वस्तु स्थिर हो, वस्तु में किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेस्ट पोजीशन में। जैसे ये बॉल अभी रेस्ट पोजीशन में है, और जैसे ही हम इसे पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो ये क्या होता है? अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ। इसका मतलब है ये क्या हुआ? मोशन में आ गया। ये जो बॉल है अभी क्या है? मोशन में है, क्योंकि ये अपने पोजीशन को लगातार समय के साथ चेंज कर रहा है। और अभी ये बॉल जो है बिल्कुल अपने पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? रेस्ट के पोजीशन में है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई एन ऑब्जेक्ट मूव्स। कोई ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मोशन? मोशन की क्या कॉजेज है? स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, जैसे कि हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बॉल को हम देख रहे हैं जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है समय बीतने के साथ साथ। अब मैंने इस बॉल को थोड़ा सा पुश किया। पुश करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये बॉल मूव करता है, और मूव, इसका मतलब ये इन पोजीशन ऑफ मोशन में है ये। अब हम क्या देख रहे हैं? थोड़ी देर बाद ये रेस्ट पोजीशन में आ गया है। मूव करने के बाद ये क्या आया? रेस्ट के पोजीशन में आया। यानी ये अब अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि रेस्ट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट होता है। रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, rest is the natural state of an object. Rest is the natural state of an object. रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट किसी भी वस्तु का एक नेचुरल स्टेट होता है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी पुल, पुश और हिट एन ऑब्जेक्ट, इट चेंजेस इट्स पोजीशन। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं या हिट करते हैं, तो वह अपने पोजीशन को समय के साथ चेंज करने लगता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करेंगे, पुल करेंगे, तो क्या होगा? वो मोशन में होगा, मोशन में आएगा। यानी मोशन का रीजन क्या हुआ? पुल, पुश और हिट। और पुल, पुश और हिट को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स। जब हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो मोशन में आ जाता है। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो हम उस पर फोर्स लगाकर उसे रेस्ट के पोजीशन में ला सकते हैं। यानी हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को
चेंज कर सकते हैं। उसे हम मोशन के पोजीशन से रेस्ट के पोजीशन में ला सकते हैं या रेस्ट के पोजीशन से मोशन के पोजीशन में ला सकते हैं। इट मीन्स दैट फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स ही मोशन का कारण है। स्टूडेंट्स, when we apply force on an object, it comes in motion or at the rest position. Students, this is a toy and this toy is at rest position. Now I am pushing this toy. What we are observing? We are observing that this toy is changing its position with time. It means that this toy is in motion. Students, when we push or pull an object, we exert pressure on it. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम इस पे क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। पुल और पुश को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स। वी कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ऑल्सो। स्टूडेंट्स, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि हम कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट को जेंटली फोर्स करते हैं और कभी कभी हार्डली फोर्स करते हैं। मीन्स कभी कभी फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, कभी कभी फोर्स कम लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे। किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा, जैसे कोई हेवी लोड है, किसी हेवी लोड को मूव करने के लिए हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। और कोई बहुत ही हल्का लाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसे हमें मूव कराना है तो उसे हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे एक बहुत बड़ा ट्रक है और उस ट्रक को मूव कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन वही एक बॉल रखा हुआ है और उस बॉल को हमें मूव कराना है तो उस पर हमें थोड़े से फोर्स की ज़रूरत होगी। यानी फोर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स हैज अ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे पुश। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स when we push or pull an object, when we push or pull an object, we exert pressure, we exert force on it. When we push or pull an object, we exert force on it. Force has direction as well as magnitude. Force has magnitude. So force is a vector quantity because we have already studied in previous chapter, if a physical quantity have both direction and magnitude, it is called vector quantity. It means that force is a vector quantity. Force is a vector quantity. Now, students, force is that cause which produce. Force is that cause which produce acceleration
in a body on which it acts, यानी फोर्स जिस बॉडी पे एक्ट करता है, जिस बॉडी पे फोर्स लगता है, उसमें क्या लाता है? एक्सेलरेशन लाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट में ये एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स दैट जब फोर्स लगाते हैं कोई मूविंग बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को फोर्स क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को वो डिक्रीज भी कर देता है। यानी फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं, यानी उसकी स्पीड को रोक सकते हैं और उसकी स्पीड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कोई साइकिल चला रहा हो और हम वो काफी स्पीड में हो और फिर पीछे से हम धक्का लगा देते हैं तो क्या होता है? उसका स्पीड और बढ़ जाता है। और कोई साइकिल चलाकर आ रहा हो और हम सामने से उसे फोर्स लगाकर रोक दे तो क्या होता है? उसका स्पीड कम हो जाता है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या आया? एक्सेलरेशन आया। यानी फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगकर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स ही मोशन का कारण होता है। फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। Force can change the position of an object. It can change direction of motion. It can change shape and size of an object. स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब बहुत सारे लोगों का, हर एक इंडिविजुअल का फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है, मोशन में आता है। फिर एक आदमी आता है जो फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट उतना ही मूव करता है जितना कि बहुत सारे लोगों ने उस पर फोर्स लगाकर उसको मूव कराया था। यानी जो एक इंडिविजुअल है जिसने बहुत सारा फोर्स लगाया था और उसके द्वारा लगाया गया फोर्स बहुत सारे लोगों के द्वारा लगाया गया फोर्स के इक्वल था, तो उस एक आदमी के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो अभी हम जान लेते हैं व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स।
resultant force. If a single force acting on a body produces the same acceleration as produced by a number of forces that single force is called the resultant of these individual forces. Students, resultant force. If a single force acting on a body produces the same acceleration as produced by a number of forces, that single force is called the resultant of these individual forces. स्टूडेंट्स, अगर एक सिंगल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगकर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है जैसा कि बहुत सारे फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगकर एक्सेलरेशन जितना प्रोड्यूस करते हैं, तो उस सिंगल फोर्स के द्वारा वो जो सिंगल फोर्स है वह इंडिविजुअल फोर्सेस मींस जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है उनका रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है. And resultant force is also called net force. Resultant force is also called net force. Resultant force is also called net force. Resultant force को हम net force भी कहते हैं. I hope students you are understanding. If there will be any doubt, any question, you can ask in comment box. Thanks.